ഉന സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെങ്ങും കൂടുതൽ ശക്തമായി വരുന്ന ദളിത് മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയാണ് ഇത്തവണ നമ്മോടൊപ്പം. വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ജിഗ്നേഷ് മേവാനി ഇൻ ടു അവർ ടോക്ക് ഷോ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, what I want to ask you, where does your movement stands at right now? जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने रेल रोको का कॉल दिया है. एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को शेप देने के लिए सरकार के सामने, गुजरात की सरकार के सामने हम लोगों ने 10 डिमांड्स रखी है, जिसमें भूमि का सवाल, लैंड रिफॉर्म्स का सवाल एक की एजेंडा है. उसके साथ साथ दूसरी भी 10 डिमांड्स है. तो जब तक ये डिमांड्स मानी नहीं जाती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा. सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. उसमें भी फोकस करके लैंड के बारे में सरकार को हम लोगों ने ऐसा चुनौती दिया है कि यदि आप 15 सितंबर तक भूमि के आवंटन की प्रक्रिया चालू नहीं करते तो हम लोग रेल रोको करेंगे. तो अभी भी जो लोग पदयात्रा में जुड़े या पिछले 2 बड़े सम्मेलन जो ऊना दलित अत्याचार लड़ाई समिति की ओर से हम लोगों ने किए, उसमें जो हज़ारों की तादाद में लोग जुड़े, वो मेंटली इस कॉल, रेल रोको के कॉल के साथ अभी कनेक्टेड है. गुजरात के बाहर के सारे लोगों को भी रेल रोको के कॉल के दौरान यहाँ पे हम लोग बुलाएंगे. फिर 6 दिसंबर को, विच इज़ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर, विल बी बर्निंग द मनुस्मृति outside the gate of High Court of Rajasthan, as Rajasthan High Court has the statue of Manu. So the movement is spreading, and this slogan, गाय की दुम आप रखो, हमें हमारी ज़मीन दो, you keep the tail of the cow, give us our land. And along with this, along with that process, we have started creating an organization. Yeah, so you were saying about land reforms. So for what has been your experience with Modi regime, and in particular because they were allowing lands to many industrial agencies and all, how it has been affecting the people of Gujarat? If I'm not wrong, the first land reforms that came into force in India was the Saurashtra Land Reforms Act, under which 55,000 tenant tillers belonging to one particular caste, that is Patidar, Patel community, were granted 12 lakh acres of land. Interestingly and shockingly both, during that phase, there is not an inch of land which is allotted to scheduled caste people. Thereafter, in 1960, government of Gujarat comes up with a GR resolution, government resolution of granting land to landless farm laborers, where first or second priority is given to Dalits. Thousands of acres of lands have been allotted, but only on paper. Physical possession is not given, even after decades. The same thing about the lands that is allotted from the quota of ceiling law. Here, in this case as well, I have been able to discover that thousands of acres of lands have been allotted, but only on paper. Land measurement is not carried out, sanad is not handed over, and above all, physical possession is not given. Why? Because in most of the cases, all this land remains wrongfully occupied and wrongfully cultivated by the feudal forces, by the dominant caste, which is offense under various sections of IPC and also under Atrocity Act. So I started writing from 2009 to 2012, continuously over the period of 3 years. I kept writing to concerned executive magistrate, subdivisional magistrate, district magistrate, revenue department, CM office, but nothing happened. So finally, as a last recourse, as a last option, I filed a public interest litigation in the High Court of Gujarat. Immediately after the filing of this petition in 2012, 2 affidavits were filed by the authorities admitting all my allegations. They stated on oath that yes, since there is encroachment, we have not been able to give possession. It's been 4 years of the filing of these affidavits. Neither they are removing the encroachment, nor registering the offense, nor giving the possession. देखिए, ये बात दूसरा था. दलित तबका बेसिकली उनको लैंड है ही नहीं थी. फिर वो कैसे अफेक्ट हो गया इस जो कॉर्पोरेटेशन के जो दौर चलाया मोदी साहब ने, उसमें इन लोगों को क्या हाल हो गया खास करके? Terribly marginalized. You see, Dalits, most of the Dalits live in rural pockets. There is no employment, right? The corporate loot has taken over. There is नर्मदा का पानी उन तक नहीं पहुंच रहा है. उनकी डीप रूटेड एग्रीरियन क्राइसिस पूरे गुजरात में है. तो जो दलित तबका, जो लैंडलेस फार्मिंग लेबरर है, स्वाभाविक रूप से उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलने वाला. शहर में बसने वाला जो दलित है, वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में है या इंडस्ट्रियल वर्कर है, तो उसका भी ज़बरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. यहाँ तो मिनिमम वेज भी नहीं दे रहा है. यदि आप एम्प्लॉयर हैं, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, आप यदि मुझे मिनिमम वेज नहीं दे रहे तो मैं स्टेट के पास जाऊँगा, कंसर्न लेबर डिपार्टमेंट पे. यहाँ तो लेबर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता.
2.5 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों ने गुजरात सरकार के फिक्स पगार में, फिक्स वेजिस पे रखा है 4,500 के, विच इज़ मच बिलो मिनिमम वेजिस, more than 2,50,000 employees. So when the state itself is exploiting their own employees, when the state itself is not giving minimum wages, one can imagine what must be the condition of the Dalit industrial workers. हम लोगों ने 28 दिन सफाई कर्मचारियों की जो सैनिटेशन वर्कर्स है उनके अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर 2014 में स्ट्राइक लगाई थी। क्यों? 8 घंटे काम के केवल 2,000 रुपये उनको मिल रहे थे। इतना एक्सप्लोइटेशन है, यू नो, एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द मोदी रेजिम, all the lands are allotted to Adani, Ambani and SR. There is no land for Dalit, Adivasi and OBC. So land reforms as a policy is scrapped and corporatization of land is taken over. अच्छा, हमें ये तो नहीं बता सकता कि जो दलित तबका है उनको इस जो दौर चला है कॉर्पोरेटाइजेशन का, उसमें इनको कोई उद्योग कभी नहीं मिली? Not just for Dalits, for all the sections there are no jobs. Modi has miserably failed in providing employment. That's why you see our performance on, you know, more than 45% children are malnourished, and the state is not inclined to carry forward land reforms, a policy which is considered always conducive for the higher levels of agrarian efficiency and productivity, meaning it has to do with creating wealth for the entire nation, entire state. But they are not carrying out land reforms, and there is no employment. On all the social indicators you see, health, education, our performance is very poor. So Gujarat model has been basically a disastrous model. ये जो आर्थिक मजबूरी में इन लोग अब पहुंच गए हैं, जैसा कि आपने इनको कॉल किया कि कुछ कामें छोड़ो, जैसा कि स्कैवेंजिंग का काम हो या सफाई कर्मचारी का काम हो, सब इस तरह का जितने भी काम में जो चलता सदियों से पीढ़ियों से चलता आ रहा है, जब इससे बाहर जाते हैं, इन लोगों का आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रोग्राम है आपके पास? उसके 3-4 डायमेंशन है। सबसे पहले तो डॉक्टर आम्बेडकर ने कैटेगोरिकली ऐसा कहा था कि आपको भूखे मरना है तो भूखे मरो, लेकिन जाति व्यवस्था ने आपके सर के ऊपर जो मेले गंदे काम थोपे हैं वो हमेशा के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो वो तो हो नहीं रहा है, तो हम लोगों का काम वो तिरस्कार पैदा करना है उनके मन में। एक, जो लोग मेला उठाते हैं या मृत पशुओं के निकाल का काम करते हैं, केवल वही उनके एग्जिस्टेंस का एकमात्र मैकेनिज्म नहीं है, वो दूसरे छोटे मोटे काम करते हैं, कुछ ना कुछ और जॉब्स करते रहते हैं। तो जिन लोगों ने ये शपथ ली है हज़ारों की तादाद में कि मृत पशुओं को निकाल का काम नहीं करेंगे, तो वो काम छोड़ देने से कोई भूखे मरने वाले नहीं है। ठीक है, और तीसरा, हम लोग तो सरकार को कह रहे हैं कि हम लोग ये शपथ लेकर बैठे हैं। मैंने मोदी जी की अपॉइंटमेंट मांगी है, दिल्ली गया था तब, कि सर आप हमें मिलिए, हमें एक्सप्लेन करिए अब हमें क्या करना चाहिए, आप हमें ज़मीन देंगे या स्टार्टअप देंगे। हाँ, ये सवाल यदि कोई उठाता है तो बहुत वैलिड है। क्या कि जिनके पास 5 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है वो लोग गुजरात और दूसरी जगह पे तो सुसाइड कर रहे हैं, तो वो तो लार्जर पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है। जो दलित मूवमेंट विच इज चॉकअप इनटू द रेटोरिक ऑफ मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, अब वो खुलकर सांस ले रही है। अब वो रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रही है, अब अनएम्प्लॉयमेंट और शिक्षा और आरोग्य और लैंड की बात कर रही है। तो सबसे पहले तो हम उनके एजेंडा में, हमारे खुद के एजेंडा में मटीरियल इश्यूज को ला रहे हैं। जमीन का मुद्दा सालों के बाद इतने बड़े पैमाने पर उठ रहा है। So we were speaking about land reforms. So as far the social reforms and changes are concerned, Bihar has been giving a very good example. Lalu, Nitish, everybody, they all brought such kind of a wonderful change in that state, and now the Dalits don't face such kind of atrocities that once they used to face some decades ago, maybe 10-15 years ago. But Gujarat in the other side, what the situation was there in Gujarat 10 years back, that is not the situation right now. Yeah, so if we go by that logic, then Gujarat is worst. ये कैसे हुआ? मतलब ये हिंदुत्व जो आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट चलाने की वजह से हुआ? बिल्कुल, देखिए मैं हर जगह पे कहता हूँ, दूसरे मैगजीन्स में मैंने इंटरव्यू छपा, मैं खुलकर कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ परिवार के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकरों को और खास करके इन गौरक्षों को चर्बी चढ़ी है। दे हैव बिकम टोटली बर्सर्क, they have become totally brazen. They think they can do anything with Dalits and Muslims and get away. But here in this case, the perpetrators of a crime himself are making the video and circulating the same, ensuring that it gets viral. Why? Because there is that assurance that state will protect them. From where does this assurance comes? This assurance comes from the agenda of Hindu राष्ट्र। इसलिए सारे गौरक्षों को छूट दे रखी है। पूरा देश
everybody was like, you know, so disturbed seeing this video. उसके बावजूद 15 अगस्त के दिन मोदी जी, when Modi ji was hosting flag तिरंगा from the Lal Killa, we were severely beaten up in Una again. What we were doing, we were just asking for few demands. We were raising few demands. एक डेमोक्रेटिक हमारा एक एजिटेशन का फॉर्म था. प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि गौरक्षा के नाम पे जो लोग दुकान खोल के बैठे हैं, they have made me angry, but it is nothing but a typical Modi brand rhetoric. It doesn't help our lives. सारे पूरे उना बेल्ट को टेरराइज करके रख दिया. 12-13 घंटों तक तांडव चला. जो उना में जो आंदोलन हुई हैं वो पहले एक ज़माने में जज्जर में जो हुआ था, जब वो मरते हुए गाय का चमड़ा निकालने के वक्त दलितों को मारा गया था, उसको लेकर जब देखते हैं इधर इतना कठिन नहीं थे, मतलब इतना सख्त नहीं थे जो गुजरात में हुआ है. फिर भी इधर का लोग जो आंदोलन में आया है और उन्होंने जिस तरह संगठित किया है वो बड़ा पैमाने में हुआ. इसका रीजंस क्या थी? There are various reasons, in the sense that I have always been pointing out to media that economic exploitation, severe economic exploitation of scheduled caste people on one hand, and continuous increase of the cases of atrocities on Dalits, and over and above that, the so-called rhetoric of vibrant and swarnim and development and economically prosperous and number one in a Gujarat model makes you more frustrated. And the rate of conviction is just 3%. And I personally believe that, you know, if you see the Rohit Vemula issue, if you see the Una incident, other parts where Dalits and Muslims have beaten up after the Hindutva forces coming to power at center, there is tremendous amount of unrest among Dalits and Muslims, even among farmers and working class. So इस तरह की एजिटेशन पूरे देश में फैलने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं. There were many Dalit movements in India, like Ramvilas Paswan, Udit Raj, even from Maharashtra, Ramdas Attavale, all ended up in BJP fold. How you are going to protect your people, or the people who are going to rally behind you, from tying up with this kind of right-wing ideologies? See, those people are like, they have become typical puppets into the hands of ruling class. Mr. Attavale, he is talking about Bhim Shakti and Shiv Shakti. Now, absolutely two contradictory terms. What has Ambedkarism to do with Hindutva? You know, but this is purely opportunism. So, it is taken over all over the Dalit movement. Our effort is, और एक सारे वंचित, शोषित, दबे कुचले वर्गों का एक जन आंदोलन खड़ा हो और उस आंदोलन के जरिए सरकार को झुकाए. There were many agitations in Gujarat, like that of Patels and all, and the end of process they were seen fizzling out, and no, we are not hearing anything from the Patel community. Its leader is been shifted to some other place. So how you are going to keep your people warm? That won't happen in our case, simply for the reason that this नारा, गाय की दूम आप रखो हमें हमारी ज़मीन दो, ये नारा हम पूरे गुजरात के कोने कोने में ले जाने वाले हैं, पूरे देश के कोने कोने में ले जाने वाले हैं. इसलिए मैं राजस्थान जा रहा हूँ, बिहार जा रहा हूँ, पंजाब जा रहा हूँ, कर्नाटका जा रहा हूँ, केरला जा रहा हूँ, तमिलनाडु जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, महाराष्ट्र जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में पदयात्रा का प्लानिंग कर रहा हूँ, राजस्थान में पदयात्रा का प्लानिंग चल रहा है, बिहार में पदयात्रा का प्लानिंग चल रहा है, गुजरात में भी दूसरी पदयात्रा का प्लानिंग चल रहा है. तो कंटिन्यूस ये मूवमेंट चलती रहे. हज़ारों की तादाद में कंटिन्यूसली लोग ये शपथ लेते रहे कि महिला नहीं उठाएंगे, मृत पशुओं को निकाल का काम नहीं करेंगे, और साथ साथ उनके इकोनॉमिक राइट्स की स्ट्रगल कंटिन्यूस चलती रहे, और उसके भी साथ साथ ट्रेड यूनियन के साथ ही और दूसरे किसान आंदोलन के साथ जुड़कर एक ब्रॉड फ्रंट बनाने की एक कंटिन्यूस प्रोसेस हम लोग चलाने वाले हैं. ठीक है, 6 दिसंबर का के भी हम लोगों ने कार्यक्रम फिक्स किया, तो तब तक ये मूवमेंट के सारे जो लोग हैं वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं कि 6 दिसंबर को हमको मनुस्मृति जलाने वहाँ जाना है. 6 दिसंबर के दिन और भी कार्यक्रम का ऐलान करेंगे. तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट चलता रहेगा. आप हिंदुस्तान के जितने भी सामूहिक संगठन हैं, सब लोगों को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसमें कोई पॉलिटिकल नहीं? फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट. आई वाज माई सेल्फ पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी. I have resigned. Of course, AAP never tried to politicize the movement. They never genuinely submitting that. They never tried to give it political color. But since I was associated with AAP, so it was giving an opportunity for the BJP and other jealous elements, even from the community, to malign me, to damage the cause. So I resigned. Now what you have got to say? So our movement is, our demands are political, our perspective is political.
What we are doing is a political intervention. We have created tremendous amount of pressure on BJP, the government which is responsible for this beating up, right? We are exposing Gujarat model. I'll keep exposing Gujarat model in all the states where I will be visiting. So we will definitely create political significance. But I don't see our movement with regard to any electoral political terms. जो आम आदमी पार्टी भी ऐसी एक संगठन थे जिसको कोई क्लास या कोई धर्म या कोई इस तरह का कोई मतलब नहीं था उन लोगों को, फिर भी वो आम लोगों को जो मसाइल गुजरात में, जैसा कि आप बता रहे दलित कम्युनिटी कुछ भी हो, इन लोगों को मसाइल को हल करने में आम आदमी इधर क्यों एक सोल्यूशन नहीं है? See, आप took their stand, they expressed solidarity, their concern. Arvind also visited, many of our activists also visited to Una. They did their part. But the way Dalits came out and emerged a very genuine Dalit struggle, very genuine militant Dalit struggle after decades. So there I decided my personal political affiliation should not become obstacle. As I pointed out, AAP was also never trying to politicize it. But still, there were people who were making false and frivolous allegations against me. So then I decided it is better to resign and continue the struggle. So will it divide the interest in between Dalits and this kind of those who are not liking BJP in the state? Normally they will be forming their own group, and you have formed another group. This will somehow help the BJP to divide the votes in between. All the Dalits all over the state of Gujarat are against BJP at the moment. They are terribly upset the way they have, responded with regard to Una and the Thangad case where 3 Dalits boys were killed in police firing in 2012. The memory is still fresh. So Dalits won't go to BJP, and in fact, let us see where it goes. But it will remain against the agenda of Hindutva. That is very clear. Yeah, and we won't take any these kind of electoral politics के context में पूरी इस बात को हम लोग नहीं देखते. Left leaders, they in general they were not inclusive of the idea of a caste struggle, but they were insisting that whatever else in India is a class struggle. So how these two different ideologies like a caste struggle and a class struggle is going to unite and merge together, and that what you are planning to become a very big mass movement in India? This debate of caste and class is going on since the times of Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar severely criticized many of the Marxists and communists of his times because of their conduct, not because of the problem he had with communism. Right? So that debate is that old. But in last a decade or so, mostly because of the genuine progressive forces emerging, taking the decent stand on Dalit issue, and also because of the pressure of the radical Dalits like me, right? So always been that putting pressure on the left forces. Now there is a substantial debate amongst leftists and Ambedkarites. So you see Rohit Vemula's language. He was also saying Neel Salam Lal Salam. See Kanhaiya, he is also saying Neel Salam Lal Salam. I am also saying Neel Salam and Lal Salam. So that is under formation. Something will come out of it. On 16th of the next month, I am attending most probably a rally or some protest in Delhi, where Sitaram Yechury and Prakash Ambedkar are involved. So I see it as a welcome move. Left is coming forward to support the Dalit cause, 1 and 2. I am continuously in touch with the trade unions. So we are trying to support our Rail Roko and all the demonstrations. Even they participated in our Padiyatra, in the march that we started from Ahmedabad to Una. And I am also in touch with from ML groups from Bihar, Delhi, Maharashtra, Kerala also, Tamil Nadu also. So progressive left will join this cause. See, Dalits also need to be a bit open about it, right? If you are a leftist not touching the caste issue, I'll keep fighting with you. But the moment you come, I'll welcome you, right? So that kind of openness is required amongst Dalits as well. So our movement has become very inclusive because of that. We are welcoming the people from NGO, from trade union, from left, from Sarvodaya. That's why it has become inclusive. Why I have been able to catch people's imagination. Why I have become the face of this movement, sort of. Only because of this inclusiveness. I speak the different language. I just don't talk about the typical rhetoric of Manuwad Murdabad, Brahmanwad Murdabad. Right? I say publicly that I am ready. I would love that if my sister gets married to a Muslim. I talk about Dalit Muslim unity very strongly. I also say that had I
another sister, I would have loved that if she gets married to Valmiki, right? There is also subcasteism among Dalits. I am also talking about the anti-farmer laws. I am also talking about the economic exploitation of all the weaker sections. So that inclusive, it is because of this inclusiveness we are spreading, and we have been able to catch people's imagination. There are many voices coming in nowadays about रिलीजियस कन्वर्शन. ये धर्मांतरण का जो मामला है वो किस हद तक आप लोगों का जो मूवमेंट है उसके लिए कामयाब रहेंगे? Conversion doesn't help Dalits beyond a point, right? 5 lakh Dalits converted from Hinduism to Buddhism under the leadership and stewardship of Dr. Ambedkar. But what is the result after 6-7 decades, right? It is not spreading, and even if it is spreading, caste has given me a particular kind of class position, right? So do I get myself out of it the way the moment I become a Buddhist? The answer is no. If my application of Sardar or Ambedkar Awas Yojana is pending at the concerned office, and if I become tomorrow morning I become a Buddhist, is that form going to get clear? Is it going to provide me shelter? Is it going to provide me food? Is it going to provide me employment? तो मेरी मुक्ति का मार्ग उसमें नहीं रहा है. कुछ हद तक तो वो कल्चरल पार्ट है जो जाति व्यवस्था का, उसके ऊपर वो प्रहार करता है कुछ हद तक, लेकिन कास्ट ऑल्सो इज अ मटीरियल फाउंडेशन, राइट? सो इट टचेज ओनली कल्चरल पार्ट, एंड उसमें भी जो नॉन दलित वर्ग है उनको सुधरना है मोस्टली, राइट? तो दलितों के बुद्धिज्म अपनाने से आई डोंट पर्सनली. See, not alone in Gujarat, in entire India, Muslims nowadays have got a kind of different image. Now you are talking about a Dalit Muslim unity and how this image is going to affect your movement. What do you think about it? Yeah, suppose assume for the sake of argument that we are not into vote bank politics. Muslims are welcome. They supported our Padyatra, our march, like anything. They embraced us with whole heart. We embraced them with whole heart. We are giving this Nara slogan, Dalit Muslim Ekta Zindabad, Gujarat model Murdabad. Of course, at the moment it is at the level of rhetoric, but it is a progressive idea which will one day become a material reality, and we want that to happen. We want Dalits and Muslims to stand united and then get associated with all the weaker sections. So everybody is coming. I mean, every organization is coming into your fold. Yeah, many of them are supporting us. Yeah. Based on my knowledge and information, just few days back, one Muslim organization was, desiring to hold some demonstration. So police did not give them permission. So they filed a petition in the High Court. Court has given them the direction, allow Muslims to do protest in favor of Dalits. So to that extent, they are fighting to support the Dalit cause. Thank you, Mr. Jignesh Mevani, for talking with Media One.